now let Mother take over the conversation. And he did. Any instance that you can actually cite where he did prove a point? Like, देखिए कागज के फूल में दोनों थे, सॉरी अपना प्यासा में एस टी बर्मन साहिब। पिक्चर रिलीज हुई, म्यूजिक सुपर हिट हो गई, साहिब की और एस टी बर्मन का झगड़ा। गुरुदत्त ने साहिब को ड्रॉप करके कैफी आदमी को ले लिया और इसने बीआर चोपड़ा ने साहिल उनका जो था ओपी नैयर से भी साहिल का झगड़ा हो गया था दयादौर में, तो ओपी नैयर को ड्रॉप करके साहिल को रिटेन किया और एक असिस्टेंट जो ओपी नैयर के थे उस वक्त एन दत्ता, उनको भी डायरेक्टर किया। तो एन दत्ता वो जस्ट नहीं सुना। यहाँ पिक्चर बन रही थी कागज के फूल, वहाँ जो ओरिजिनल टाइटल था उस पिक्चर का वो था मुझे जीने दो। साहिल इंटरेस्टेड upon B.R. Chopra and made him change the title, and the title was धूल का फूल। तो कागज के फूल और धूल का फूल, so it was a head-on collision in a way. Wow! And his music was super duper hit with the picture was super duper hit, and that year I think the award for also for singing went to मुझे इसे धूल का फूल। जहाँ वो कलाम है न तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, आज भी लोग उसको याद करते हैं। एक चीज है कि somewhere जावेद always Sahir always remained a young poet, an angry young man. Even though he may have been in his mid-50s, he always portrayed an angry young man. उनके कलाम में भी वो फ्लेवर शायद रह गया लास्ट में। हाँ, उनकी जो कलेक्शन है पोइट्री का, उसी का नाम है तलखियाँ, which means bitterness. And one can understand from where this bitterness has come in his life. He was the son of an extremely wealthy zamindar, jagirdar, not zamindar. And the father divorced the mother. And although the father had married perhaps 11 times and used to divorce wives after a little while and marry somebody else and so on, but he happened to be the only son that Jagirdar had. Otherwise, he only had daughters, and for Jagirdar particularly, a son, heir apparent, used to be very important. तो कोर्ट में केस गया एंड साहिल से पूछा कोर्ट में, 8 साल के बच्चे थे कि तुम, अगर मैंने नोट किया है कि आप स्टेज पे आ रहे हैं बोलने, द मोमेंट यू गेट अप फ्रॉम योर सीट द ऑडियंस इज नोटिसिंग यू। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप तो अपने को यू थिंक नो एंड ऑफ योरसेल्फ, तो ऑडियंस आपके खिलाफ है। इसका आपको वो समझता क्या? अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं दिख रहा है, आप यू लुक वेरी नर्वस, देन ऑडियंस विल हैव कंटेम्प्ट फॉर यू। इसे अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं। You have to be somewhere in between. You have to be confident, but your confidence should not bruise the ego or self-respect of the reader or the listener. And at the same time, there has to be a vulnerability in your poetry, in your persona, in your speech, that I'll do it, I'll manage it, but with a little help of my friends. तो थोड़ा सा उसमें करिए कि देखो भाई, मैं आई एम गोइंग टू डू माय बेस्ट, मैं थोड़ी सी मदद मुझे तुम्हारी भी चाहिए। सुन रही हैं आप? तो मैं आपके पीछे सुना ना आपने? तो ये जरूरी है। ये कैसे क्रिएट होता है? दिस इज व्हाट मेक्स यू स्टार। और फिर वो स्टार में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर क्या लगता है कि उनमें कोई बात है, तो उसकी वल्नरेबिलिटी कम होना शुरू होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है। And then he dropped, the sheet dropped. People stop liking them. वो जो बैलेंस है, वो बैलेंस आप कैसे आप क्रिएट करेंगे कि कितना आप में कॉन्फिडेंस और कितनी वल्नरेबिलिटी, कितने आप शाय हैं, कितने अनअबैक्ट हैं, इसकी परसेंटेज जब तक सही है तब तक यू आर करिश्मेटिक।
और जिसमें बैलेंस बिगड़ा एंड यू आर गॉन, या तो आप ज़्यादा शायर हो गए या ज़्यादा एरोगेंट हो गए तो भी आप, एंड इट हैपेंस सूनर और लेटर, इट हैपेंस टू पीपल दैट दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट. Is it a personality attribute or is it a poetry attribute? No, it's a personality. Personality. Poetry doesn't come out of some heaven up there. It comes whatever comes out of the personality. जो भी आप पेंटर हैं, पोइट है, आप कहानियाँ लिखते हैं, आप खबर लिखते हैं, आप एक प्रिंस और फेरी की भी कहानी लिखेंगे, तो अल्टीमेटली वो आपके अंदर से आ रही है, उसकी मोरालिटी, उसकी एथिक्स वही होगी जो आपकी है, और कहाँ से लाएंगे आप? तो परी वो बात कहेगी जो आपको ठीक लगे, और प्रिंस वो जवाब देगा जो आपको अच्छा लगे. तो अल्टीमेटली तो आप ही की पर्सनैलिटी कहीं फेरी बन रही है, कहीं प्रिंस बन रही है, कहीं बेगर बन रही है, कहीं किंग बन रही है, लेकिन वो है तो आप ही की, वरना कहाँ से लाएगा? Of the various attributes, If it is out of proportion on this side, it is bad. If it is within the proportion, it is good. कोई भी बात, कोई भी क्वालिटी, ये अलग नहीं है. एक आदमी है तो ज़्यादा बात नहीं करता, अब वो इतना चुप रहता है कि लोग कहते हैं क्या है, ये आदमी है, what he is thinking, nobody knows. सुनना एक अजीब है, very mysterious person, I don't trust him. अच्छा तो वो आदमी बहुत ज़्यादा बोलने लगे, keep on jabbering all the time, कान खा जाता यार. अब एक ही चीज़ थी, proportion चेंज हो. एक आदमी है, he cares for money, अब वो ज़्यादा केयर करने लगेगा तो आप उसे कंज्यूस करेंगे, आप उसे ज़्यादा खर्च करने लगेगा तो आप कहेंगे स्पेंडथ्रिफ्ट है. एक ही काम, प्रोपोर्शन चेंज हुई. एक आदमी झुक के मिलता है तो ज़्यादा ही झुक के मिलता है तो नहीं हिता है वो करेक्ट क्या है, बहुत ही एकदम स्लाइमी आदमी हर एक को फ्लैटर करता रहता है. वही आदमी अगर ज़्यादा उधर चला जाए, ही इज एन एरोगेंट पर्सन, आपको कुछ ऐसा लगता है. वही डिग्रीज है, ये डिग्रीज चीज़ों को अच्छा बुरा करती है. लविंग योर मदर, लविंग योर सन is a positive quality. But if it goes out of proportion and to some kind of an extreme, it becomes a case. I think Sahil was so much upset with his mother, and the mother was so upset by the Sahil that it was not normal. ये एक बिल्कुल वो पिक्चर बनी थी साइको, उसमें जो रिलेशनशिप माँ बेटे की थी, it was तकरीबन like this. So strange because his mother was only emotional person for a very long time. सब बाकी तारीफें तो आप सक्सेस जब होती है तब मिलती है, मगर अल्टीमेटली तो जो माँ थी वही उसका सहारा थी फॉर ईयर्स. और मुझे मालूम है कि मेरी माँ ने कितनी मुश्किल से मुझे पाला. त्रिशूल में गाना है, আমি যখনই জীবনের গঙ্গামে রোদে পেটে পড়ে, আমি যখনই বাকিদের আর নিজের মিথ্যে ক্লান্ত হয়ে সকলের সঙ্গে লড়ে নিজের কাছে হেরে যখনই ঘরটায় যেতাম, ওই হালকা গাঢ় খয়েরি রঙের ঘরটা, ভারী দয়ালু সেই ঘর যে নিজের নরম মুঠোর মধ্যে আমাকে লুকিয়ে ফেলত. যেমন কোনো মা তার বাচ্চাকে আঁচলে ঢেকে নেয় আর ভালোবেসে বকুনি দেয়, এ কেমন অভ্যেস তোমার, দুপুরের জ্বলন্ত রোদে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়. সেই ঘরটা মনে পড়ে. একটু চেষ্টা করেই যাকে খুলতে হতো, আঁটো সাঁটো আর বেশ ভারী সেই কাঠের দরজা, ঠিক যেন কোনো বদমেজাজি বাবা নিজের খড়খড়ে বুকে আদরের সমুদ্রকে লুকিয়ে রেখেছে. সেই কেদারা আর তার সেই জোড়া যমজ বোন, আমার বন্ধু ছিল ওরা দুজনেই. সেই অবাধ্য ঠোঁট কাটা আয়না যার মনটা ছিল ভালো, সেই বাঁকাচোরা আলমারি যে বুড়ি মার মতো এক কোণে দাঁড়িয়ে আয়নাকে শাসন করতো সারাক্ষণ. আর ছিল এক ছোট্ট ফুলদানি, ভারী শয়তান, সারাক্ষণ এদের দুজনকে দেখে মুখ টিপে হাসত সে. সেই জানলা যেন বোঝাপড়ায় ভরা এক চিলতে হাসি, আর জানলার গায়ে ঝুঁকে পড়া গাছের পাতারা সেই অস্ফুট সবুজের ঝাঁক, তাকে আর দেরাজে মুখ গোমরা করে পড়ে থাকা গম্ভীর সেই সব বই,
যারা অপেক্ষা করে আছে কখন আমি কিছু জানতে চাইব। মাথার কাছে আমার ঘুমের সাথী, ক্লান্তির উপশম, নরম মনের সেই বালিশ, যার কোলে মাথা রেখে আমি ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ছাদের কড়িতে বর্গায় কত না কাহিনীর টুকরো লেগে থাকতো। টেবিলে রাখা আর দেয়ালে টাঙানো কত কত ছবি, সকলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো, বিশ্বাস ভরে হাসতো। তারা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি একদিন তাদের ছেড়ে এমন ভাবে চলে যাব আমি, আর এমন ভাবেই চলে যাব যে আর কোনোদিন ফিরে আসবো না। এখন আমি যে বাড়িতে থাকি বড়ই চমৎকার তার সবকিছু, এবং মাঝে মাঝেই এখানে চুপচাপ বসে ভাবি সেই ঘরটা কথা বলতো। जो कि सच तो ये है कि मैं यहाँ पढ़ चुका हूँ एक दो बार, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोग को याद नहीं होगा। तो वो कमरा याद आता है। I remember that room. मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के जब भी उसे कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुप देता था जैसे कोई बाप बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे। ये क्या आदत है जल्दी दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम? वो कमरा याद आता है। दबीफ और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा, कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में चाहत के समंदर को छुपाए हो। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो एक गुस्ताख मुफट आईना जो दिल का अच्छा, वो बेहंगम सी अलमारी जो कोने में खड़ी एक बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तनबीह करती थी। वो एक गुलदार नन्हा था, बहुत शैतान, उन दोनों पे हंसता था। दरीचा या जहानत से भरी एक मुस्कुराहट, और दरीचे पर झुकी वो बेल कोई सब सरगोशी। किताबें ताक में और शेल्फ पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर सब मुंतजिर इस बात की मैं उनसे कुछ पूछूं। सिरहाने नींद का साथी, थकन का चारागर, वो नर्म दिल तकिया, मैं जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था। छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियाँ थी। वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पे आवेदा तस्वीरें मुझे अपनाइयत से और यकीन से देखती थी, मुस्कुराती थी। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा, मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा। मैं जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है, मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ वो कमरा बात करता था। Studying architecture in Bombay, I met two young Parisians, two young Frenchmen who had hitchhiked all the way from Paris to Goa. Eric and Hubert. And they inspired me to think that my duty was to do what I loved most and not what was expected by society or by my parents, of me. It was drummed into my head that it was okay to have music as a nice hobby, but that you needed something, a serious profession, like engineering, law, medicine. In my case, I chose architecture. And when I met them and I talked to them, I realized that music was my first love and that is what I should make my profession. I decided to make my passion my profession.
So the change started there. And then when I traveled around Europe hitchhiking and meeting people, young people my age at that time, all in now 20s, all those things really shape you and change your way of thinking. Over here, for example, if you got a job, if you were lucky to get a job, that's it, you held on to it for dear life. Whereas over there, they talk nothing of working for 6 months and then taking off on a holiday, traveling, and then coming back and finding another job when they came back. So, okay, the job scene was different there, but it does change your attitude towards life, towards job, towards a profession. I don't think that concept really exists in India even now. Putting your so-called important things at bay and doing the more important things in life to discover yourself. It has changed, of course, a lot, but I think things like job security, sort of having... Well, I don't know, look at yourself. You were a journalist, but you followed your heart, and you're a musician, you're a drummer now. Yes, well. In the same way, I was an architect, or I was studying architecture. I completed the course, but I decided to pursue my passion for music over there. And I think these are rare examples, yeah. I mean, not to say that I am rare, but of course you definitely made the path your own. There's somebody who's sitting in front. Try to fit my life into 100,000 words, but even 100 zillion wouldn't have been enough. I tried to cut my story short, but that's a thought I had to abort. Oh, I couldn't write off the cuff, 'cause I simply couldn't bluff. And words are little birds, you never know where they'll fly, and what memories they'll pick up on the way. For they never follow terms, they're prone to dig up worms, or to sing a song and brighten up your day. Fly away, fly away, up above the clouds, away from the crowds. Fly away, fly away, fly up to a place where there's only you and me. Memories which are beautiful, memories which are painful, memories which are artful, they're full of life is life. Memories which are blissful, memories which are hurtful, memories which are wishful, they all make up a life, make up a life, my life. I've been diving into my past, and the treasure I have amassed was something unexpected, and I met myself at last. I freed him to set me free, exposed for all to see. I said, how do you do? He said, it's nice meeting you too. We exchanged a few words, which led to more words. And before we knew it, we were into seconds and thirds. For words are little birds, you never know where they'll go, and you can stop them once you set them free. Fly away, fly away, up above the clouds, away from the crowds. Fly away, fly away, fly up to a place where there's only you and me. Fly away, fly away, fly up from the
there's only you and me. Fly to a place where there's only you and me. Fly away, fly away, my little words. Fly away, my little birds, and build a little nest in my little fat book. Thank you. Money, baby. Hold'on pe lipstick, galon pe rouge, catwalker in their high shoes. Disco में जाके आना चाहे तेरा तुझे घर होना चाहिए बबीलों के साथ एक होए हमर कमरा उड़ गए लड़की पायल मस्ती में तो गंगल करके रे हम्मा 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 हे हम्मा 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 ये पहली बार मिले तुम प्रेम में ये निकले तुम मेरी जवानी धीरे धीरे मदम मचले रे हम्मा 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 हे हम्मा 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 हे हम्मा 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 हे हम्मा 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 I'm sure we've overshot the time. I'm sure we've overshot the time, but I can't stop without a good old Goan song. Have you been to Goa? Have you been to Goa? Do you speak Konkani? No. What a shame. Would you like to learn Konkani in 2 seconds flat? Yes. All you've got to say is ya, ya, maya, ya. Can you do that? Yes. All together. Ya, ya, maya, ya. And now you do it with the beat, and with the rhythm, and with the melody, okay? Ya, ya, maya, ya. Ya, ya, maya, ya. Ya, ya, maya, ya. Ya, ya, maya, your turn. Undram jamam, aniyam sangatuka. Undram jamam, aniyam sangatuka. Animagori chapila lagi pelu madinaka. Animagori chapila lagi pelu madinaka. Undir mama ayo, animajapona di belong. Undir mama ayo, animajapona di belong. Animagori chapila takai jaga sanayo. Animagori chapila takai jaga sanayo. Everybody, ya ya maya ya, 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 ya ya last time, ya ya maya ya, ya ya maya ya, ya ya maya ya, ya ya maya. Lights here. Connection with the Tata Prize, right? Yes, exactly. I believe you do. So maybe you could, just kick us off with how this started and what your thoughts are about this trade-off between the real and the real. It started with a phone call from my nephew, Shadari. And he said that
I have a friend called Nikhil Advani, and they want to make something on your father and Homi Baba, and they're very keen to come and meet the family. So can they come? So I said, of course. So this big group came, including Siddharth Roy Kapoor and Nikhil and several others. And the first thing they said is that we want to make this because we feel that the kind of frauds and corrupt people that are being made into heroes in our films and among our web series, we need to give young people icons who were selfless, who were brilliant, who had a vision, and that's why we want to do this. And I, as somebody who's been What was individuals could do? Do you mind? No, it was just that there was a problem with the scene kind of ended in Homi leaves to go do something, and we just didn't know what it was exactly, and we didn't know what exactly he was going to be sorting out. Also, he'd written the bare bones of the script before, and then we would have people come in, he would consult with scientists, and then he would, engineers, and try to figure out what specific thing we're going to discuss that went wrong within this thing. Because in general, we have a blueprint of those times and of those men, and you can read about them, and you can learn about them, and you can talk to people related to them. But the actual people, the actual shading and coloring, that you kind of have to do for yourself, because everyone will have a different opinion of him. Everyone will have a slightly different idea of how he was, depending on the context with which they knew him. And we wanted as much as possible. That was Abhay's plan. And so I also relaxed at some point in my own research, etc., because I just saw that the entire team was trying to make this project with so much love and effort. I have to say, the love and tenderness and respect was extraordinary, especially for people involved in Bollywood. They treat subjects with such derision. It's like, ये चीज़ है, हम इसकी film बनाएंगे. It's vulgar and it's disgusting. Yeah. And this was so different. आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है, ये जब मैं गुजरा था तब कहाँ था? कहीं तो होगा. गुजर गया है तो अब कहाँ है? कहीं तो होगा. कहाँ से आया, किधर गया है? ये कब से कब तक का सिलसिला है? ये वक्त क्या है? Properly. It's simple. Actually, he could have just spoken Hindi really badly. Then the Bengali would Yes, that would be nice. With two nice jokes, a few football references. Never forget that there's only one Pele. Many thousands of years have passed. Yeah. And he came here, right here in Kolkata. Arwa was too young, he wouldn't know. Well, I remember when Maradona came to Kolkata. Much better. Maradona was going through mental health, like he needed help because he was mad. And he came to Calcutta, spent one day there, and said, "These people are mad." And at that time, Maradona was actually a mad person. So here is possible. This is how Bengal has helped the world over and over again. We're like a giving kind of. I don't know what's like in Cal, but in Mumbai, all my Bengali batchmates and friends all just became Brazilian during World Cups. It just took over, like Brazil and Bengal, one thing, and then they would talk about, my Valerio and my Socrates and all that. It was amazing. Does that happen here? Yeah. All Cal guys into, Argentina. Oh, Argentina. So it's split now. That's India, Pakistan, and South America, by the way. Yeah. Brazil and Argentina split. So They want to split up with the more like East Bengal has been pushed behind, and now we've got Argentina versus Brazil. But also, you see, I was finding we are very difficult to explain. Who's we? Because you're a politician. Are you a Bengali, a Mumbaiker, a comedian, a leftist, a communist?
a man with less hair. Who are you representing? I'm representing Cyrus Butcher's parents. That's right. Both my moms. Don't worry, we love each other. There's no acrimony here. Sandeep is a different story. I know. We are freedom. So what I'm saying is, tell me one other state in this country, we talk about politicians being funny, that won an election with a rap song. You know, everywhere else, politicians went and made speeches. BJP came here, made many speeches. You guys won an election on one song, Tata. But you saw that all the other parties then try to create their own rap songs. But That is very funny. That was very funny because Hindi and Bengali very tough to translate, right? So in Hindi they tried, "Hum khelenge," doesn't work. People started doing hum dekhe and it was completely up. And that damn issue about gender that North Indians bring here for no reason. Unnecessarily polarizing people on gender. What is that nonsense? Exactly. Yeah, we were the original gender. Yes, we all fluid. Just keep it going. No, the gender equation in Bengal is quite simple. Women rule, men work for them. Ladies! You're ready for member of parliament. Shall we let him ask us a question? Now, All comedians, when Munar Farooqi goes to jail. yeah. He goes to jail, we all get a call. He comes out, he gets a call. Also when Bhagwat Singh Maan became the chief minister, without anyone telling him. Yeah, He he was a comedian. They did call us up and say, would you like to comment? Like the whole comedy fraternity was beaming with pride. Apna aadmi aa gaya and all that. I never met him in my life. I didn't know he was a comedian. But that's a tricky thing. And I mean, you have to be serious for a moment. When something serious like Munawar Faruqi happens and you get called on to a show to comment on it, I mean, what do you do? At one level, you are standing So up for your... sorry about taking that question, thank you. As a student of law, technically he should have been arrested by the Madhya Pradesh police because the FIR was filed in Mumbai, so he has to be arrested by the Maharashtra police if at all. So the whole thing didn't make any sense. Well, apparently once you're in somebody else's state, they just put you in lockup and give you the food of the area, and that's how it is. And also, which you are arguing the technicality. You know, the technicalities are important because that's how a guy goes in or stays out. Of course. Also, but the larger issue is also... Yeah, I mean, which Yeah, it was vegetarian. Ronald was really upset. He lost 5 kilos. Nobody's talking about that. I mean, what are the secularism? The guy should get the food he wants. Everywhere else they say, okay. Last So let me wish. bring this up also. When we go to veg weddings, nobody feeds us. Huh? But I have to get a caterer for veg people for my wedding. You know how much it costs? It was very painful. How did we get here from Munar Farooqi? I don't know. I don't know. This was... Somebody's got to... You take us back to Munawar Elephants in Faruqi. the room, this is one of them. You know, I don't understand the way you treat people in this country. Yeah. Why are we always marginalized? And separate tiffins and all for non-veg, like we are untouchables. And what is all this kind of thinking and talking? I will come back. ভালো আমি তো বলে দিই মেকিং এ ছোট করে যেহেতু সুযোগ পেয়েছি যে ধন্যবাদ ডাক বাংলাকে যে আমি একটি কলাম লেখা শুরু করেছি যে কলামটির নাম ম্যাকি আমার বাড়ির ম্যাকবুক যে তার জবানিতে লিখছে একের পর এক কলাম এবং সে কনস্ট্যান্টলি বলতে থাকছে তার বিরুদ্ধে বেসিক্যালি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বনাম মনুষ্যত্ব বা হিউম্যানিটি ভার্সেস এআই এবং ম্যাকি হচ্ছে মেশিনের প্রতিনিধি সারাক্ষণ ধরে মানুষের নিন্দে করাই তার কাজ এবং মানুষের বিভিন্ন জিনিসপত্র দেখে বিভিন্ন ইমোশন দেখে অবাক হয়ে যায় এবং সেটা নিয়ে বিশ্লেষণ করে তা এরকম বিভিন্ন কলম মাসে বেরোতে থাকে ডাক বাংলায় একটি কলমের নাম ইমেজ যে কলমটির কথা অগ্নি বলছে আমার সবচেয়ে প্রিয় কলম আমি পড়ছি বেশিক্ষণ সময় লাগবে না মনে হয় ঠক ঠক এই যে আমি ম্যাকি আমাদের মেশিন কমিউনিটির প্রতিনিধি আমি একটাই মানে বলতে চাইছি আমার কোনো আলাদা সত্তা নেই মানে বলতে চাইছি মায়ের সামনে একরকম বউয়ের সামনে একরকম বসের সামনে একরকম আবার বাচ্চার সামনে একরকম এত খেলা আমি দেখাই না আমার কোনো ধোঁকা নেই আমি যা আমি তা আমার প্রসেসর স্পিড যদি 2 গিগাহার্টজ হয় তবে সেটাই 2 বলে বিক্রি করে 1ও পাবেন না আবার 4ও পাবেন না মানুষগুলো কিন্তু সেরকম নয় মানে যে নিজেকে 10 বলে বিক্রি করছে আসলে দেখা যাচ্ছে সে কোন রকমে আড়াই মিথ্যাচার বলতে পারেন কিন্তু যদি সত্যি ফেক করতে যায় তখন কিন্তু আমাদের সঙ্গে পারবে না ডিপ ফেক নিয়ে আগেই বলেছি এর আগে একটি কলম ছিল যেখানে ডিপ ফেক নিয়ে আলোচনা করে আমরা যতদূর অনুমান করতে পেরেছি মানুষ এটাকে ইমেজ বলে সবসময় একটা ইমেজ মেনটেন করতে হয় মানুষকে আর সেইটা করতে গিয়ে মানুষের চুল পেকে যায় চামড়া ঝুলে যায় ব্লাড প্রেশার বাড়ে আর বাঙালি হলে ক্রমাগত পেট কামড়ায় আমার প্রশ্ন তুই যেটা নোস সেটা প্রজেক্ট করতে যাওয়ার দরকার কি তোর এখানে দার্শনিক প্রশ্ন রাখে মানুষ কি চায়
টাকা, কিন্তু প্রচুর টাকা রোজগার করেও মানুষ কাঁদে, হাতে ফাঁকা সময় নেই। তাহলে সময় নেই, সময় দিলে বলে বাবা কি করি, সময় কাটানোর জন্য কিছু একটা করতে হবে। তাহলে আরো টাকা নেই, না রে বাবা টাকা থাকলে কি হয় নাকি, সে তো কত লোকের কত টাকা, আসলে চাই ক্ষমতা। আচ্ছা তাই নেই, হয়ে যায় মন্ত্রী, টাকাও হলো ক্ষমতাও পেলি, ও মা তাতেও দেখি রাত্রির বেলা কাঁদতে বসেছে, ওরে এবার কি চাই, বলে প্রেম চাই। আগেই বললেই পারতিস, নে যা প্রেম কর। দুদিন গেল কিনা গেল, ও হলি, এবার কি হলো, এমন বউরা মুখে